सारी दुनिया बोलती है विश्वास रखो, फेथ रखो, फेथ रखो, इस पे रखो फेथ, अपने आप पे फेथ रखो, भगवान पे फेथ रखो, लेकिन कोई बोलता नहीं फेथ कैसे रखो. Well, that's exactly what I'm going to tell you in this particular video based on this powerful lesson, the second step to riches of Think and Grow Rich. Yes, my friends, I'm considered an expert on these principles of Think and Grow Rich, but I am not an expert. I am just an expert student. I've been reading this particular book, Think and Grow Rich, since last so many years. Thousands of mentees in India from Think and Grow Rich Mastermind have got results. And what I've understood in this particular lesson, जो नेपोलियन हिल ने अपनी किताब में लिखी है थिंक एंड ग्रो रिच में, दैट फेथ इज द मोस्ट पावरफुल मिसिंग सीक्रेट इंग्रेडिएंट टू गेट द सक्सेस. So let's understand not just what is faith, but what faith can do for you, how to develop faith so you can start to get the results. Your health, your wealth, your happiness, your success, your financial freedom is inevitable if you get this one particular principle of success, which is faith. Let's do this. You see, most people want success in life. Some even work hard for it, but only few actually believe it's possible for them. And that's the real reason 99% people are stuck up where they are stuck up. आगे बढ़ते नहीं life में. Why is that? Maybe the answer lies in this missing ingredient, that missing lesson, missing thing, which is faith. See, without faith, your dreams will remain a fantasy. But with faith, your dreams can become a reality. See, most people do these rituals, बार rituals करते हैं और बोलते हैं कि मुझे faith आ जाएगा, I got faith. I'm talking over here of real faith, applied faith, not blind faith. See, blind faith का मतलब क्या कि किसी ने बोल दिया, आपने विश्वास कर लिया. That's blind faith. और blind faith का प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी hurdle, difficulty, obstacle आएगी आपके लाइफ में towards achieving your goal, immediately वो faith निकल गया. Because you don't have base, a strong understanding how to develop that faith. So here I'm not talking of blind faith, अंधश्रद्धा पे मत विश्वास करो, but really focus on faith with understanding, on the faith of the natural laws of the universe. If you understand this universe, how it works, everything is in order. Order is heaven's first law. If you understand how Mother Nature is working, look at this. The sun rising at a particular time, the sun setting at a particular time, the tides coming in, the tides going out, the waxing and the waning of the moon, the planetary movements, सब कुछ clockwork precision से हो रहा है ना. So there is complete order. और अगर ये order है, that means we have to believe that there is one superpower, one energy, one source, one infinite intelligence, one God, whatever way name you call that particular God, that's going to get you that faith. And when you have that faith with understanding, you will really have the faith to use in your life, in your daily life, to take those actions and get the results. This is faith with understanding, not some blind faith. The whole world says have to have faith, you have to believe in yourself, you have to have faith. But nobody teaches, everybody preaches, but nobody teaches how to develop faith. Napoleon Hill ने एक powerful line बताई है Think and Grow Rich में, that repetition of affirmations, of orders to your subconscious mind is the only known way of developing faith. Now understand this. Repetition, not once, not twice, but again and again, again and again, again and again. Repetition again and again of what you want. Repetition of affirmations. आप affirm कर रहे हो अपने आप को. Of what? Affirmations of orders to whom? Not to your conscious mind, to your subconscious mind. यानी आपको जो repetition करना है आपके affirmations को with emotions करना है, तो ही subconscious mind समझेगा वो भाषा. So repetition of affirmations of orders to your subconscious mind is the one and only known way to develop faith. Powerful. Very powerful concept over here. You see, most people keep on chanting, अच्छा है करो, and nothing wrong or bad about it. Keep on writing something, but there are no emotions. When there are no emotions, पूरी जिंदगी लिखेंगे, पूरी जिंदगी chanting करेंगे, कुछ नहीं होने वाला. So you really have to put that emotions and also repetition से करेंगे तो ही होगा. I'll give a simple analogy over here. जैसे दुनिया बोलती है कि एक झूठ को आपने बार बोल दिया, तो दुनिया उस झूठ को सच मान लेती है. Yes or no? So repetition का power यही है. So when you keep on repeating with your emotions, you're going to develop that quality of applied faith in your life. एक powerful line है Think and Grow Rich में से, which most people read Think and Grow Rich, but they don't understand this. और काफी important sentences Napoleon Hill ने बताया है in this particular lesson of faith.
बहुत पावरफुल लाइन्स है. आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू दोस लाइन्स एंड यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड आफ्टर रीडिंग द बुक के कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे ताकि आपके जीवन में वो फेथ आ जाए दैट यू गोइंग टू गेट दैट फाइनेंशियल फ्रीडम, दैट वेल्थ, दैट हैप्पीनेस, दैट हेल्थ, दैट रिलेशनशिप, दैट जॉब विच यू रियली वांट टू हैव इन योर लाइफ. One key line from the book is, faith is the eternal elixir which gives life, power and action to the impulse of thought. Now understand this line. Most people will read this line and they will not understand what Napoleon was trying to say from Think and Grow Rich. So क्या बोलते हैं इसको? Faith is the eternal elixir. That means elixir is a magic portion. एक ऐसा जादू, एक ऐसी जादू की छड़ी आपके पास है and that is faith. And that, what does that do? Which gives life, power and action. That means जो एक simple एक impulse, एक विचार है कि I want to become financially free और I want to have the dream job, एक simple विचार, एक simple thought है. लेकिन अगर आपने faith को उसको add कर लिया तो वो magic portion बन जाएगा आपके thought को. वो life देगा, power देगा, action देगा और तभी आपके रिजल्ट्स आएंगे. बहुत पावरफुल लाइन है. रीड दिस लाइन वंस अगेन फ्रॉम थिंक एंड ग्रो रिच एंड अपने जहन में डालिए कि जब भी फेथ का मिश्रण करते हो विद दैट थॉट, दैट्स वेयर इट स्टार्ट्स टू एक्चुअली गेट द रिजल्ट्स इन योर लाइफ. अदरवाइज इट्स जस्ट गोइंग टू रिमेन अ सिंपल intangible thought. Now as you understand that faith is not a thought, faith emotion है. तो जैसे आपने इमोशन को रखा तभी आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप ट्रिगर करेंगे एंड थॉट्स चार्ज्ड विद इमोशन बिकम मैग्नेटाइज्ड. जब भी आपने थॉट को इमोशन से जोड़ लिया तभी वो मैग्नेटिक पुल क्रिएट करेंगे और जब भी आपने फेथ यानी इमोशन को जोड़ लिया आपके थॉट को तभी वो अट्रैक्शन काम करेगा. दैट इज द रियल रीजन लॉ ऑफ अट्रैक्शन मे बी नॉट वर्किंग फॉर यू बिकॉज आपने आपके थॉट्स को मैग्नेटाइज नहीं किया विद इमोशंस. और फेथ से अगर आपने मैग्नेटाइज कर लिया सो योर थॉट इज इलेक्ट्रिक फोर्स इन नेचर. अंडरस्टैंड दिस. थॉट इज इलेक्ट्रिक. That means it's an electric force where your thought is energy, the most potent form of energy. Your emotions are magnetic, that magnetic pull which is in your subconscious mind. So thought, energy and emotions magnetic. That electromagnetic force साथ में मिलके आपका attraction काम करता है. This is actually science. It's not philosophy. Electromagnetism, thoughts and emotions combine कर दिया and that's where you really start to get that manifestation working for you. The importance of faith with your thoughts. Now I'm going to give you simple action steps to build your faith. Simple powerful action steps तो आप रोजाना यूज कर सकते हो इसमें. Simple daily ritual follow करिए. You start your day by writing your goal. Every day write your goal and when you write your goal you see, feel and believe. Have your goal card with you. You visualize yourself every single day at least morning में 5 minutes और रात को सोने से पहले 5 minutes. मॉर्निंग 5 मिनट्स एंड रात को सोने से पहले 5 मिनट्स. इतना आपको करना है. ड्यूरिंग द डे आपने कर पाया तो दैट्स ऑल्सो गुड बट एटलीस्ट 5 मिनट्स मॉर्निंग 5 मिनट्स इन द नाइट. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिचुअल. यू रीड, you feel, you speak it aloud, you listen to your own voice. That's where you're reprogramming your conscious subconscious mind. और जितने इमोशन से करेंगे, जितना आप बिलीफ से करेंगे, स्ट्रॉन्ग फेथ से करेंगे, उतना ज्यादा आपके फास्ट रिजल्ट्स आएंगे. नेपोलियन हिल ने बताया है that there are 17 principles of success और उसमें से the third principle is applied faith. थिंक एंड ग्रो रिच में इसका प्रिंसिपल का नाम फेथ है लेकिन लॉ ऑफ सक्सेस में इसको अप्लाइड फेथ बताया है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अप्लाइड फेथ? फर्क क्या है फेथ और अप्लाइड फेथ में? सी अप्लाइड फेथ मीन्स के यू हैव अ बिलीफ, यू हैव फेथ बट यू शुड अप्लाई दैट मीन्स यू शुड टेक एक्शंस ऑन द फेथ. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे पास अभी रिमोट है और मैं रिमोट दबाता हूँ, मुझे पता है कि अगर मैं रिमोट का बटन दबाऊंगा तो AC ऑन ऑफ होगा. दैट्स माई डेड फेथ विदाउट एक्शन. बट व्हेन आई एक्चुअली press the button and the remote actually works, AC ऑन ऑफ होता है, that is applied faith. तो जब भी आप एक्शन लेते हो आपके फेथ के ऊपर towards achieving your goals, that's applied faith. तो फेथ को एक्शन मोड में लाइए. डोंट जस्ट डेड फेथ कि हाँ मुझे विश्वास है, मुझे भगवान पे विश्वास है, आई नो होगा. नो 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 नो. यू स्टार्ट टू टेक एक्शंस ऑन योर फेथ. दैट इज अप्लाइड फेथ एंड दैट्स अ वेरी पावरफुल डिस्टिंक्शन. बहुत माइन्यूट डिस्टिंक्शन है where people have dead faith and people who succeed have applied faith. So I want you to apply your faith towards your goals. Follow these rituals. Start with daily practices of ritual which I mentioned to you in this video. Get this applied faith. Read the chapter of Think and Grow Rich of faith, the second step to riches. बहुत सारी important lines हमें बताई गई है and use these important lines which Napoleon Hill has mentioned in Think and Grow Rich and see how you can develop this quality of faith. I think that's a missing ingredient.
See, hardworking people, smart working people, same industry, same business, why only 1% people become successful? Perhaps this missing ingredient is applied faith. Get that faith, go to the next stage. I am here to help you, to support you, to guide you further. If you have liked this particular video, if this video has given you some inputs about how to develop that faith and how that faith is so important for your success, then like this particular video, share this particular video to someone who wants to develop that faith. Subscribe to our channel for further videos. I am Siddharth Shah. I am the CEO of Think and Grow Rich Academy. We represent the Napoleon Hill Foundation in India. Let's get ready to think and grow rich. Thank you so much.